The white man's burden manifests itself by shoving policies down the throat of the global south, convincing us that its ideas and approaches are the only way towards development. One such relic of neocolonialism is Pakistan's regime of intellectual property law. The global north has long been advocating for a stronger intellectual property law, basing their stance on two main arguments, A, moral and B, economic. The moral argument is that ideas have no less moral claim to protection than actual and real property. This entails that art or pieces that contain the distinct personality of the author are protectable as copyrights, and inventions are protectable as patents. The economic argument is that it is in the interest of less developed countries, like Pakistan, to have a strong intellectual property law regime as it gives an incentive to innovators/entrepreneurs to invest there. The argument goes that foreign innovators would only want to invest in Pakistan if their IPRs are protected, which would result in technology transfer from foreign to domestic markets. Additionally, domestic innovators/entrepreneurs will only be interested in innovating if they have exclusive rights of production/monetization of the innovation for an extended period of time. While these arguments are constructed skillfully and make sense theoretically, they stand neither evidential nor logical scrutiny. Would a strong intellectual property rights regime benefit Pakistan? The moral argument of protection does not stand for a nation that was deprived of technical and educational experience under long colonial rule, as it cannot compete with the level of innovation of countries that developed at the expense of the now developing country, Pakistan. Pakistan inherited a huge human resource problem which still persists, with 22.8 million children out of school. Bringing quality education to Pakistan and solving the issue of innovation would require that quality literature and material be made available as economically as possible. The possibility of such material being produced from scratch locally is unlikely as people are not skilled enough to produce material or literature that is on a par with the developed world. Thus, the material must be imported at affordable costs. In this scenario, the copyright law makes it expensive for developing countries like Pakistan to import such material or even locally print it, thus slowing intellectual development in the country. This was the same argument furthered by the U.S. in its context for delaying the signing of the Berne Convention for the protection of literary and artistic works for 100 years. Is it not hypocritical, or at least cynical, of the same country to insist upon the moral right of authors? Is it not immoral to deprive 22.8 m, plus the entire global south, of quality education? As for the economic argument, using the same education example, it may be asked how IPRs will encourage more inventions in the domestic market due to competition if the population is not equipped with the knowledge and expertise to innovate in the first place? The only option Pakistani entrepreneurs have is to get a license from foreign innovators. This, again, makes the product more expensive and causes IPR imports to rise while IPR exports are virtually non-existent. Additionally, if the licensor produces the product itself, it would be much cheaper to import the product directly from the manufacturer than the licensee, as local production would be costlier due to having to pay the usually very high license fee. Even the assertion that strong IPRs would result in foreign companies setting up plants in Pakistan for which they would hire locals, resulting in technology transfer, is a far-fetched conclusion. These companies only hire locals at posts that do not amount to anything more than skilled labor. Additionally, there is no empirical evidence to suggest that strong IPRs encourage innovation. On the contrary, the coronavirus vaccine fiasco at the hands of the pharmaceutical giants of the capitalist West serves as an example, where IPRs of technology/innovation could not reach the market of developing countries for weeks, causing thousands, if not millions of deaths. IPRs at the development stage that Pakistan is in right now only serve to benefit the developed countries while the Pakistani taxpayer pays for the upkeep of the IPR tribunals, courts and other executive machinery. The case studies of all countries that have become technologically advanced have had weak IPRs, or at least a protectionist regime, to allow their population to take inspiration from and compete with foreign markets, be it the US or more recently China. Pakistan should follow the same methodology.
The writer is a lawyer. Published in Dawn, January 28, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. सफ़ेद फार्म आदमी का बोझ ग्लोबल साउथ के गिले में पॉलिसियां डालकर जाहिर होता है और हमें यकीन दिलाता है कि इसके ख्यालात और नुक्ता नज़र ही तरक्की का वाहिद रास्ता है। नौआबादियाती निज़ाम की ऐसी ही एक निशानी पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानून है। ग्लोबल नॉर्थ तवील अरसे से एक मजबूत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानून की वकालत कर रहा है, जिसकी बुनियाद दो बुनियादी दलाइल पर रखी गई है, एक अखलाकी और बेमाशी। इखलाकी इस्तेदलाल यह है कि ख्यालात हकीकी और हकीकी मलकियत के मुकाबले में तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम इखलाकी दावे नहीं रखते हैं। इसका मतलब यह है कि आर्ट टुकड़े जो मुसन्निफ़ की मखसूस शख्सियत पर मुश्तमिल हैं, वो कॉपीराइट के तौर पर महफूज हैं और इजादात पेटेंट के तौर पर महफूज हैं। माशी दलील यह है कि यह कम तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे पाकिस्तान के मुफाद में है कि एक मजबूत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानून का निज़ाम हो, क्योंकि यह जिद्दत तराज़ो है / कारोबारी अफराद को वहाँ सरमायाकारी करने की तरगीब देता है। दलील यह है कि गैर मुल्की जिद्दत तराज सिर्फ इसी सूरत में पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहेंगे जब उनके IPRs महफूज होंगे, जिसके नतीजे में टेक्नोलॉजी गैर मुल्की मार्केटों में मुंतकिल होगी। मजीद बरा घरेलू जिद्दत तराज / कारोबारी अफराद सिर्फ इसी सूरत में जिद्दत तराजी में दिलचस्पी लेंगे जब उनके पास तवील मुद्दत के लिए जिद्दत तराजी की पैदावार / मोनेटाइजेशन के खुसूसी हुकूक होंगे। अगरचे ये दलाइल महारत से बनाए गए हैं और नजरियाती तौर पर समझ में आते हैं, लेकिन वो ना तो सबूत छूटिए हैं और ना ही मंतिकी जांच पड़ताल पर कायम है। क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मजबूत निज़ाम से पाकिस्तान को फायदा होगा? तहफ़्फ़ुज़ की अखलाकी दलील एक ऐसी कौम के लिए खड़ी नहीं है जो तवील नौबादियाती हुक्मरानी के तहत तकनीकी और तालीमी तजुर्बे से महरूम थी, क्योंकि वो इन ममालिक की जिद्दत तराजी की सतह का मुकाबला नहीं कर सकती जो अब तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान की कीमत पर तरक्की करते हैं। पाकिस्तान को इंसानी वसाइल का एक बहुत बड़ा मसला वर्षे में मिला है जो अब भी बरकरार है। 22.8 मिलियन बच्चे स्कूल ओहे से बाहर हैं। पाकिस्तान में मियारी तालीम लाने और जिद्दत तराजी के मसले को हल करने के लिए ज़रूरी है कि मियारी अदब और मवाद को ज़्यादा से ज़्यादा माशी तौर पर दस्तयाब किया जाए। इस तरह के मवाद को मकामी तौर पर शुरू से तैयार करने का इम्कान नामुमकिन है, क्योंकि लोग इतना हुनरमंद नहीं हैं कि वो ऐसा मवाद अदब तैयार कर सकें जो तरक्की याफ्ता दुनिया के बराबर हो। इस तरह मवाद सस्ती कीमतों पर दरामद किया जाना चाहिए। इस सूरत हाल में कॉपीराइट कानून पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए इस तरह का मवाद दरामद करना मकामी सतह पर प्रिंट करना महंगा कर देता है। इस तरह मुल्क में फिक्री तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। ये वही दलील थी जिसे अमेरिका ने अपने तनाजुर में आगे बढ़ाया था, जिसमें 100 साल तक अदबी और फनकाराना कामों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बर्न कन्वेंशन पर दस्तखत को मुअख्खर किया गया था। क्या इसी मुल्क के मुसन्निफीन के अखलाकी हक पर इसरार करना मुनाफिकाना या कम अज़ कम मुज़हका खेज नहीं है? क्या 22.8 इसके अलावा पूरे ग्लोबल साउथ को मियारी तालीम से महरूम रखना गैर अखलाकी नहीं है? जहाँ तक माशी इस्तेदलाल का ताल्लुक है, इसी तालीमी मिसाल का इस्तेमाल करते हुए ये पूछा जा सकता है कि अगर आबादी को जिद्दत तराजी के लिए इल्म और महारत से लैस नहीं किया गया है तो मुसाबकत की वजह से IPRs मकामी मार्केट में मजीद इजादात की हौसला अफजाई कैसे करेंगे? पाकिस्तानी सनतकारों के पास वाहिद ऑप्शन यह है कि वो गैर मुल्की जिद्दत तराजुहे से लाइसेंस हासिल करें। ये एक बार फिर मसनूआत को ज्यादा महंगा बना देता है और IPR दरामदात में इजाफे का सबब बनता है, जबकि IPR की बरामदात अमली तौर पर मौजूद नहीं है। मजीद बरा, अगर लाइसेंस दहिंदा खुद मसनूआत तैयार करता है तो लाइसेंस याफ्ता के मुकाबले में मैन्युफैक्चरर से बराह रास्त मसनूआत दरामद करना बहुत सस्ता होगा, क्योंकि आमतौर पर बहुत ज्यादा लाइसेंस फीस अदा करने की वजह से मकामी पैदावार महंगी होगी। यहाँ तक कि यह दावा के मजबूत IPRs के नतीजे में गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में प्लांट लगाएंगी, जिसके लिए वो मकामी अफराद की खिदमात हासिल करेंगी, जिसके नतीजे में टेक्नोलॉजी की मुंतकिली होगी, एक दूररस नतीजा है। ये कंपनियां सिर्फ इन ओहदों पर मकामी लोगों को भर्ती करती हैं जो हुनरमंद मजदूरों से ज्यादा कुछ नहीं है।
मजीद बरा ये बताने के लिए कोई तजुर्बाती सबूत नहीं है कि मजबूत IPR जिद्दत तराजी की हौसला अफजाई करते हैं। इसके बरक्स सरमायादाराना मगरिब की दवासाज कंपनियों के हाथों कोरोना वायरस वैक्सीन की नाकामी एक मिसाल के तौर पर काम करती है, जहां टेक्नोलॉजी/जिद्दत तराजी के IPRs कई हफ्तों तक तरक्की पजीर ममालिक की मार्केट तक नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से लाखों नहीं तो हजारों अमवात हुई। इस वक्त पाकिस्तान जिस तरक्याती मरहले से गुजर रहा है, इसमें IPRs सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं, जबकि पाकिस्तानी टैक्स दहिंदगान IPR ट्रिब्यूनल्स, अदालतों और दीगर एग्जीक्यूटिव मशीनरी की देखभाल के लिए अदायगी करते हैं। इन तमाम ममालिक के केस स्टडीज़ जो तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, उनमें कमज़ोर IPR या कम अज़ कम एक तहफ़्फ़ुज़ पसंद हुकूमत मौजूद हैं, ताकि उनकी आबादी को गैर मुल्की मंडियों से तरगीब हासिल करने और उनके साथ मुकाबला करने की इजाज़त मिल सके, चाहे वो अमरीका हो या हाल ही में चीन। पाकिस्तान को भी इसी तरीक़ाकार पर अमल करना चाहिए। मज़मून निगार एक वकील हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 28 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.